My name is Rahul Nore. Okay, so I'll be taking your biology entire part. Right now, you don't have any options. But so whether you like it or not like it, but I will be taking your biology part. Okay, I'm very particular about homework, about your notebooks, and about your diagrams. Being a biology, diagram has to be good enough. I mean, good means not artistic, somewhat better. Okay, so we're talking about these 3 points one by one. First, your notebook. Are you making a separate notebook or a combined notebook? What? This is chemistry biology. Separate physics. Physics, chemistry separate. Bio combined. Which one? Combined is separate. Okay, I don't have there's no problem on my side at least. Physics, chemistry, biology, एक combined होगा, पढ़ा के बुक खरीदोगे और उसमें तीन पार्ट में होगे, then also I don't have a problem. Bio का अलग बुक हो, then also I don't have a problem. Overall, इतने सालों का experience कहता है, I do not require more than 10 to 15 pages for the entire year. Okay, इसके ऊपर भी use one year. Okay, conditions applied. Okay, if you don't do my homework, तो शायद पूरी book भी कम मिलेगी. Okay, so first choice अलग book बनाना है या combined book बनाना. Second, I really hate अगर book के पीछे drawing की है, cartoon बनाया है, जो भी करना है आपके स्कूल या book में करना, यहाँ पे book को clean, specifically at least my subject. For Samriddhi, you have your marks yes. So one is that. Second thing is in terms of your homework. You collect it later. तुम्हारे लिए homework बहुत important होगा because आपका जो volume है, I hope volume पता हो कि ये जो view मिले हैं, ये volume में बहुत सारे पीछे chapter के questions होते हैं, जैसे कि आपका जो first chapter है उसमें almost 105 questions है, उसके अलावा बोर्ड के अलग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अलग क्वेश्चन है, सबका कॉकटेल करो तो 200 के आसपास तो आ ही जाएगा. ओके, एंड आई विल नॉट हेजिटेट यू टू मेक दैट राइट 5 times or 10 times. कंडीशंस, देयर इज नो रिटर्न होमवर्क फ्रॉम माय साइड. सो आप जो भी मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर आई विल आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, नो लेंथी क्वेश्चन, बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चन. अगर इफ यू आर अटेंटिव यू विल आंसर. If you are not attentive, you will not answer. So अगर आपने आंसर कर लिया तो you are in the class or you are outstanding in the class. Your choice. And also it will not be like this. एक क्वेश्चन पूछा नहीं आया तो बाहर नंबर, ऐसा भी नहीं. There are 3 questions. अगर 2 नहीं आए तो बाहर. Okay? उसमें भी कंडीशंस अप्लाई है. अगर एक क्वेश्चन पूछा something like what is cell, उसका भी आंसर नहीं आया तो भारी लिखूंगा. बिकॉज अगर 10th में आके व्हाट इज सेल नहीं आया पढ़ाने के बाद भी तो तुम किधर भी फिट, तुम्हारी फिट है. इज इट क्लियर? थोड़ा टाइम के लिए मैं थोड़ा ये करूंगा बिकॉज तुम्हारा रोज रमजान चल रहा है, इसलिए इट्स ऑल एक्सक्लूसिव फॉर दिस टाइम द हार्ड डिवीजन. आफ्टर रमजान इज ओवर एक साथ समाप्त कर दूंगा सामने. ठीक है, वैसे नौबत नहीं आनी चाहिए. और दूसरा एक एडवांटेज भी है, यू शुड लीव योर लाइफ इन द क्लास एट किंग साइज बिकॉज माइनॉरिटी, अकेला लड़का है ना, फुल राजे महाराज की तरह है, इनके ऊपर सब हुक्म नहीं करनी चाहिए, ये काम करके देना. तो जो कपट, सो वन इज अबाउट ए बुक, अबाउट योर होमवर्क. ओके, थर्ड is about the drawings because बहुत सारे आइटम्स में ड्रॉ करना है. Okay, so how many of you are good at drawings? 2, 3 artists. Okay, बाकी हो गया. Sir, not my cup of tea. Sir, बन गया तो बड़ी बात है, तो सर भाड़ में ऐसा कुछ है. Okay, then apply. I am asking you, this is for your benefit. You understand this part? Biology without diagram is cannot be possible, like body also. So diagram के लिए marks है, and we need to draw that. Now I also understand this part. Diagram is not everybody's cup of. हर एक born artist नहीं.
कई जन आर्टिस्ट होते हैं और कई जन सर वो सेल भी बन गया ना बहुत बड़ी, राउंड भी बन गया बहुत बड़ी बात। So for them, I would give a suggestion because see, I do not expect you to draw perfect, एकदम artistic नहीं चाहिए, पर basic diagram के लिए marks तो मिले उतना तो आना चाहिए। So दो चीजें diagram में important होती है, एक तो proportion और थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। अपना क्या होता है, proportion पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जैसे 9th में आपका सेल था, पूरा पेज है, अपन सेल एक माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, टीचर को ऑलरेडी 2 है और 2 लगाना पड़ेगा। या दूसरा इतना माइक्रोस्कोप होता है क्या लेबल्स ऐसे इधर किधर जाते हैं पता नहीं, मार्जिन के अंदर घुसते लेबल्स। ये सब अगर अवॉइड करना होता है, बस प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट है, तो बेस्ट ऑप्शन है बचपन में मम्मी डैडी ने एबीसीडी सिखाया हुआ, हाथ पकड़ ले, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ऐसा स्लेट के ऊपर घुमा, यही करना है। यू टेक अ ट्रेस पेपर खरीद लेना, जो डायग्राम्स है उसके ऊपर एक बार ट्रेस करना, और जब भी फ्री टाइम मिलेगा, बोर हो रहा है, पीछे कार्टून बना रहा है, मन कर रहा है, तो वो ट्रेस पेपर के ऊपर बनाते बैठे। The moment keep on pressing on the diagram n number of times, आपका बाय डिफॉल्ट हैंड उस क्वेश्चन पे आ जाता है। ओके, सो या 50% ऑफ द डायग्राम विल बी ओके, बोर्ड उतने में खुश हो जाता है। स्कूल की टीचर नहीं होगी पर बोर्ड हो जाएगा, सो यू विल गेट मार्क्स। हाँ, लेबलिंग आना चाहिए, अब उसके लिए कुछ नहीं करते, अपना सिर्फ प्रैक्टिस। देन डायग्राम्स नीड टू बी प्रैक्टिस एवरी टाइम। You are not MF Hussain, nor you are in my place। क्या एक बार बोर्ड पे बनाया, हमने कॉपी कर लिया, स्कूल में एक बार बनाया और डायरेक्ट एग्जाम में बना लिया, दैट कैन नॉट बी डन, बिकॉज 15 या 16 साल 17 साल के बाद उतना परफेक्शन आता है कि डायग्राम अच्छे से बने, वरना उसका तुम पूरा बैंड ही बजाओ। सो काइंडली अवॉइड स्पेसिफिकली हार्ट, किडनी, digestive, पहला चैप्टर में बहुत कुछ है, so I think that you need to take care of. Am I clear, everybody? Okay. अब इसके अलावा साथ होमवर्क के बारे में बोल दिया, बुक के बारे में बोल दिया, डायग्राम के बारे में। अब चौथा आता है क्लास का डिसिप्लिन। 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं कर सकते 6 बच्चों में, ऐसा एकदम आई डू नॉट वांट क्लास आप सीरियसली बेटा है, इतना भी नहीं चाहिए, हंसी मजाक थोड़ा तो हम भी करेंगे, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभार एक आध दिन सर बोर हो गया, अभी नहीं जा रहा है इसके ऊपर लास्ट 15-20 मिनट, तो आई कैन अंडरस्टैंड एंड स्टॉप, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। स्पेसिफिकली 6 घंटे का जब लेक्चर्स होंगे ना वैकेशन में, तब थोड़ा बहुत लंबा जाएगा, दैट टाइम आई कैन अंडरस्टैंड। पर वो 6 घंटा दैट टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज अभी धीरे धीरे रीड करना शुरू हो जाएगा ना, तब तक 6 घंटे की आदत डाल देंगे, तो तब प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दैट्स अनदर थिंग। अब इसके अलावा आपको कुछ पूछना है मुझको, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू कैन आस्क मी नाउ। The latecomer, my name was RSM. Okay, अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग नाम है, राहुल, RSM, Serdar, Hippopotamus, और कुछ नाम है, so I don't mind giving the names also. Okay, पर जब तक मैं ठीक हूँ तब तक ठीक हूँ, जैसे जल्लाद के रूप में आ जाऊँगा तो आपका बैंड बजाने शुरू हो जाएगा। And I don't discriminate between boys and girls, specifically girls, because जब सुनना पड़ता है ना तो बॉयज को ज्यादा सुनना पड़ता है, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया। और गर्ल्स हमेशा गंगा जमुना भाई तेरे पर करती है, तो अगर तुमने गंगा जमुना भाई तुम्हें और तुम्हारे लिए बस, सो ट्राई नहीं मत कर, तुम्हारे रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा मैं और वर्स्ट हो जाऊंगा, बिकॉज बेचारे बॉयज, बेचारा अकेला लड़का, उसको बचा के रखना, तुम ऐसा कुछ भी मत करना कि भाग जाए। Okay, jokes apart, anything you want to ask? Maybe school IDs. I don't teach CBSE school ID that is initially I was in St. Mary's.
Now I'm visual Khargar, where I say Khargar में रहता हूँ. और यूपी में I'm there for last 18-19 years. तो अगर आपको कई भाई बहन से पढ़ के गया होगा यूपी से पहले, लड़की पढ़ के गया होगा यूपी से बड़ी बहन वगैरह, तो हम तो से उसको पूछना RSM, तो मेरे बारे में पूरा हॉरोस्कोप मिल जाएगा, ये पूरा डिटेल हॉरोस्कोप, हाउ गुड आई एम, सो पूरा मिलेगा, तो वो बहुत कुछ बोलती और फिर उसके then so I think we start with the syllabus part. Before I start with the syllabus, last question to you is I want to know your school name. वहाँ से आप वहाँ पे रहती है यहाँ से जाते हैं अभी यहाँ पे रहती है वहाँ पे जाते हैं Pan International School Sanbara for CBSE Engineering Reliance Foundation but और सब लोग फोकस करने रहते हैं क्या कंसोली साथ में जाओगे शायद तुम्हारा फोकस करना so the 3 of them are focusing was सर एक समझ नहीं आ रहा रहते उधर चाहते उधर स्कूल को चाहते ना सीखे ना एक भी नहीं brand इंसान पढ़ा anyways fine I think school इसके लिए put together because sometimes it happens आपका syllabus आगे पीछे होगा like कोई स्कूल और टॉपिक चालू करेगी normally tend to be नहीं आता बहुत रेयर है पर बोल नहीं सकते आजकल की भी ग्रोथ है तो आईसीएसई भी बहुत प्रॉब्लम आता है सीबीएसई में डोंट नेवर फाइंड सच प्रॉब्लम्स सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्कूल स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ 10 का एकेडमिक स्टार्टेड नो 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 3 जन का ना 3 जन का था वो किस चैप्टर का स्टार्ट लाइफ प्रोसेस बायो इंडिकेटर्स टीचर गया है क्या लोग नहीं गए teacher is not appointed. Not appointed. Yes, because my teacher correction purpose okay, fine. ठीक है मतलब I think सिर्फ लाइफ से स्टार्ट हुआ है अचल जी के स्कूल में लाइफ से स्टार्ट हुआ होगा वो शायद जून जुलाई में लाइफ प्रोसेस ही रहेगा तो आराम से जाता है बिकॉज़ अपना 4 चैप्टर है तो वो आराम से किसी लाइफ प्रोसेस का जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस करता है फर्स्ट एग्जाम जो आपका होगा उसमें 2 पार्ट कवर करते हैं फर्स्ट सारे स्कूल पहले 2 पार्ट और उसके बाद नेक्स्ट 2 पार्ट नेक्स्ट पार्ट में फिर आराम से सेकंड टर्म में कवर करें तो चैप्टर बहुत रैंक तो और भी हो जाता है सो आराम से कंप्लीट हो सकते हैं इन सीबीएसई we never faced any problem in terms of syllabus completion for my subject तो अपना आराम से जाता है अगर आपको लगता है कि कई और चैप्टर किया होगा then it is not done by me or there is exam immediately so we might go मतलब normally अपना मई में पास जाएगा तो अपन स्कूल से आगे ही रहेंगे आईसीएसई में चालू कराएंगे पर इन केस यू नो बैक सर्टेन केसेस अगर टीचर ने फिर किसी को चैप्टर चालू कर दिया then the option for me is I cannot go jump उसके ऊपर if the exam is immediately there please let me know initially only so that you can arrange extra lecture for doubt आपको चैप्टर खुद पढ़ना है उसमें आपको कुछ छोटा मोटा डाउट होगा तो आई क्लियर है पर ऐसा होगा नहीं आपसे इतना मेरा एक्सपीरियंस करो बस सीबीएसई में इशू नहीं आएगा सो बेस्ड अपॉन दैट वी वुड स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ओनली व्हिच इज लाइफ प्रोसेसेस ओके अब दूसरा चीज जो मैं आपको बोलूंगा इज आई वांट माय चिल्ड्रन टू बी चिल्ड्रन सो आई डोंट वांट देम टू बी मंकी सो अब बुक्स है ना आज मिले तो घर पे रख लेना सब उठा के मत लेने आना पहली चीज दूसरी चीज डू नॉट ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक्स तो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना वो घर पे मेरे सब्जेक्ट के रखते हैं बाकी टीचर्स को अपने आप में पूछे ना फॉर माय सब्जेक्ट आई डू नॉट वांट योर टेक्स्ट बुक्स आपका वॉल्यूम काफी है मैं वॉल्यूम ही चाहिए उसमें से विल गो एवरीथिंग टू दैट पार्ट व्हेन रिक्वायर्ड आई विल से यू टू ओपन द वॉल्यूम तब तक वॉल्यूम भी बंद करना
When required, I will let you know क्या लिखना है, वरना वो भी जरूरत है. Reason, then whatever I will be teaching over here, everything is given in the volume. ठीक, अभी वॉल्यूम चेंज हुआ है, कंबाइन हो गया, तो मैं आपको पेज नंबर नहीं बताऊंगा, नया वॉल्यूम है. पुराना वॉल्यूम तो आपको पेज नंबर इस पैराग्राफ में चौथा या पांचवा लाइन इतना ही बता सकता था. अभी शायद वो देखा नहीं, एक बार आ जाए तो उसमें वो भी बाहर जाएगा, इस पेज पे ये करने में लिखा है. So right now I do not want anything, so you can relax. Tension मत लेना, start करने के पहले, so relax. अब मैं सिर्फ simple questions पूछूंगा, तो answer that is the better option. Okay, देख लेते हैं आपका जनरल नॉलेज कितना अच्छा है. Okay, so the first chapter we will start is life processes. So my first question to you is, what is life process? The processes of organisms to go through so that it can survive. तो मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे पैसा कमाना जरूरी है. So life process is unknown. Am I right or wrong? Kind of नहीं ना. पैसा कमाना लाइफ प्रोसेस है कि नहीं है ये आप मुझे बताओ. चलो क्वेश्चन में अलग से पूछता हूँ. जो अपन ने बचपन में पढ़ा था, वो स्टार्ट शायद बायोलॉजी से स्टार्ट से किया था, बायोलॉजी से भी पढ़ा था. डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग. सर इसका भी आंसर नहीं आता तो मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ. तुम जिंदा हो या मरे हो, ये बता सकते हो कि तुम जिंदा हो तो क्यों? Processes an organism does to term it as living process. Example. Respiration, locomotion, digestion, excretion. Good. So okay, let's follow this first one. Okay. What are the various processes occurring in your body which define that you are living? Is it respiration, excretion, digestion, locomotion, or which? Nutrition. Nutrition. बस इतना ही. अरे जिंदा होना, Response to stimuli. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस और Reproduction. रिप्रोडक्शन और अरे क्या मरे हुए क्लास को पढ़ा रहे हैं और कुछ. Okay, all those processes which occurs within a living organism, wherein it is to keep him alive, is what I mean by life processes. Okay, all the sum of activities occurring within the living organism, okay, is what I mean by life processes, which is required for its survival or sustenance. Is what I mean by life processes. There are various life processes, or there are various parameters which defines that life processes, or which we can say are the characteristic of a living being. So when I say living being, we normally say there are different parts. Like we said, respiration, nutrition, then excretion, then circulation, then reproduction, response to stimuli. These are some of the various processes which defines a living thing. But when I say living being and non-living being, so I do not mean that they are the actual processes which define the living being. It may be plus and minus. I cannot say strictly कि ये होगा तो ये living being, ये नहीं हो रहा है तो non-living being. Reason, they are just a point difference between living. Some of them may be shown, some of them may not be shown. Like some other factors like growth also is a factor. So now if I take an example of all these things, at my case, if I am taking over my example, will I show growth in terms of height? At this age, will I grow? No. Am I dead? No. So parameter है living being के लिए, but not in strict sense. कि growth होगा तो ही living being, जरूरी नहीं. Okay? Like non-living things also sometimes show growth. Sand dunes.
सैंड आगे कम होते जाते हैं, या हिमालयन माउंटेन्स इट इज ग्रोइंग, ओके, तो इसका ये मतलब है कि वो लिविंग है, नो इट्स अ डेड कंपोनेंट, सो दिस मे नॉट बी स्ट्रिक्ट पैरामीटर. सेम गोज एस्पिरेशन. व्हाट इज एस्पिरेशन? Exchange of oxygen in our body is not as special. Some of them show aerobic, some of them show anaerobic. So again, will not be a criteria. Then goes nutrition. Some of them eat, some of them do not eat. Okay, there are certain organisms जो खा नहीं खाते. That also is there. Excretion, throwing out of the waste, etc. Circulation, transportation. Every organism may not show circulation as a part of it. So they are not a strict criteria. But some of them may be present, some of them may not be present. Like reproduction. Do all organisms reproduce? No. तुम reproduce करोगे, मैं नहीं करूँगा. Boys, okay, well, we can associate with it, but हमें बच्चा पैदा होने वाला है? नहीं. Okay, so that is what I mean by reproduction. There are some organisms which may not reproduce, but some of still they are living. There are some organisms which may not show respiration, but still they are living. So they are not a strict criteria for defining living organism as such. But it's some of the parameters which can define living. First chapter में life processes में we are going to study 4 such characteristics. So what are 4 characteristics? First characteristic we are going to study is nutrition. Second we are going to study is respiration. Third, we are going to study is transportation, which is a part of circulation. And the last process we are going to study in this chapter is excretion. Okay, so we are not studying everything, we are studying 4 processes. इसके अलावा the 5th process, response to stimuli, ये हम next chapter में पढ़े, control and coordination. इसके अलावा the most coveted, awaited, whatever you can say, reproduction chapter. Okay, everybody's most favorite chapter. Okay, is reproduction. That is why I said coveted, awaited, whatever. Where I will be guiding factor, you are already a PhD holder in this subject. That is what I experienced. Okay, so reproduction. So all these 6 parameters we are going to study in actual syllabus. 4 over here, 5th, this one, 6th, this one. So ये एक chapter हुआ, 2nd chapter, 3rd chapter. One more chapter completely different from this is genetics and evolution, heredity and evolution. The most important and the most interesting chapter for yourself, because that is the only chapter जो आप पहली बार पढ़ो. इसके पीछे इनके बारे में आइडिया है, उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, ये आप पहली बार पढ़ोगे. And it is more interesting because heredity में what you study is how are the characters का. तुम काले, पीले, नीले, गोरे, टिंगे, जो भी हो, वो क्यों हो, ये हम उस चैप्टर में. So it is more interesting to study. सर ऐसे क्यों है, ये क्यों है, सर वो क्यों नहीं है, उसमें बारे. And then the last chapters जो अपन सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ेंगे, बिकॉज वो टाइम पास होगा उस टाइम पे. सर ये पढ़ना पड़ता है, आवर एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वैसे उठ के जाओगे एग्जाम. दैट इज दिस चैप्टर्स. सो वहां पे अपन फास्ट जाएंगे, यहाँ पे अपन थोड़ा स्लो जाएंगे. इन दिस आल्सो सम पार्ट विल बी वेरी फास्ट, सम पार्ट विल गो स्लो. बाय डिफॉल्ट इसमें मैं फास्ट जाऊंगा, इसमें आप मुझको वैसे भी स्लो डाउन करोगे. सर repeat. Whatever you are not able to understand, please ask 10 times. I don't have any problem. दिखने में मुझे बेकार दिखता होगा, गुस्सा करता होगा, पर पढ़ाते वक्त आपने 10 बार ही पूछा, I will not show any reaction. It's my job. I will do it again. जब तक आपको समझ में नहीं आता, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. Am I clear? So we start with the 4 processes. Now I want you to give me basic idea about this. I don't want a proper definition. आपको क्या समझ में आता है ये मुझे बताओ. So I want you to explain any of the term which you know. What is nutrition?
what is excretion, what is aspiration, and what is transport. Transportation सबको पता है. So I want the three terms. What is nutrition? So in the intake of Good. Intake of food to produce energy and carry out the various life processes. Respiration, exchange of gases. Good. आपने भी कहा. Transportation is function of material from here and there throughout the world. Excretion. Removal of but so which waste? Which can? Okay, the left out undigested food from out is known as excretion. So everybody, basic idea सबको है. Good. आपको basic idea है तो वो basic ही है. Because इसमें से दो term wrong हैं. जो आपने मुझे बोले वो दो term wrong हैं. एक term wrong था वो respiration, दूसरा term wrong था वो expiration. ठीक? अब मैं आपको पूछता हूँ. What is breathing? अच्छा. What is breathing? Respiration. What is respiration? So breathing. What is breathing? Are you breathing करते हो कि नहीं? So what is respiration? आपने जो मुझे बोला वो breathing था. No sir, कुछ नहीं. You said it's an exchange of gases or taking in of air, giving out of air. या proper word में taking in of oxygen, giving out of carbon dioxide. ये जो भी बोल रहे हैं वो breathing है and not respiration. Okay? Breathing is a part of respiration. आप respiration define करो. Am I clear? Okay, so there we need to understand. आपने को ज़्यादा मिस नहीं किया. We just going with these four terms, mentioning these four terms. तो सबसे पहले nutrition, perfectly said, taking in of food for energy to carry out various life processes. ये ठीक था. Respiration, exchange of gases. नहीं, वो breathing है. So what is respiration? It is nothing but breakdown of food to release energy. In the presence of oxygen or absence of oxygen is known as respiration. ये पढ़ेंगे usually अपन जब proper करेंगे. Transportation, transport of nutrients to and fro from the body is transportation. Excretion, आपने मुझे कहा removal of waste. जब आपको मैंने पूछा waste कौन सा, तो आपने कहा removal of undigested food is such. हाँ तो बोलो. ये लोग तो आगे आना. मतलब I'm just asking you for my knowledge. आप खाने के लिए लेके आते हो या सिर्फ क्या बोलते खजूर? बहुत सावधान. So मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ. बेस्ट ऑप्शन क्या एटलीस्ट मेरे लेक्चर. अगर if you don't find odd ना, I want you to आप क्लास में बैठ के. ठीक. रीजन अगर कुछ पढ़ना नमाज में पढ़ना तो नहीं ना, तो आप क्लास में बैठे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं. अनलाइन आपके डब्बे में हाथ डाल दिया. वैसे लड़के करती नहीं ऐसे. थोड़े अच्छे माइंड से मांगे थे. The reason is you will miss out. आप आराम से बैठ के यहाँ पे खाओ. मुझे कोई I don't have a problem when if a child sit in my class and eat something. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. स्कूल में भी मैं बंदा बोलता हूँ डब्बा निकालो खाओ और यहाँ पे ध्यान में. बहुत सारे मुझे बोलते हैं ऐसे क्यों. सिंपल है. अगर मैं उनको ना बोलूंगा तो वैसे भी डब्बा निकालेंगे खाएंगे चुप के. तो उस चक्कर में वो यहाँ पे ध्यान देंगे या वहाँ पे ध्यान देंगे. तो उससे अच्छा प्यार से बोलो खाओ और वहाँ पे ध्यान देंगे. And I'm strong believer. पहला पेट पूजा ये सब कुछ. So next time try this. At least for my lecture, not anybody else lecture. Okay. So now excretion. When I say excretion, throwing out of waste. अब इसमें what you said as undigested होगा.
तो ये एक्सप्रेशन नहीं है. Now, what is the basic difference? Throwing out of toxic or metabolic or nitrogenous waste. थोड़ा टेक्निक हो जाता है, थोड़ा लोअर लेवल पे आप. Throwing out of is excretion, and throwing out of is a part of nutrition. तो आप जो मुझे बोल रहे हो वो न्यूट्रिशन का पार्ट, ये टॉक्सिक नहीं, ये सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड है जो उसका सबस्टेप है, पर ये टॉक्सिक है. थोड़ा और अगर इलाबोरेट करना है, थोड़ा और सिंपल है. इसको फुल स्टॉप लग गया. आई होप फुल स्टॉप अंडरस्टूड. डोंट गो एट ऑल. ओके, यू विल नॉट डाई, बट अदर्स विल हैव अ प्रॉब्लम. इसको फुल स्टॉप लग गया तो आगे RIP या लेट लग ही जाएगा. दिस स्टॉप यू अपस्टेयर्स, दिस was others are affected, nothing will happen to you guys. Okay, so that's the difference between the excretion and nutrition. Am I clear? So we start with the first function, that is the first person known as nutrition. अब यहाँ से अपन प्रॉपर करते जाएंगे. You will be repeating certain things along with me so that आपको जल्दी याद आता है. So we start with the first one, nutrition. अब proper definition में अगर देखा जाए, nutrition is defined as the procurement and utilization of nutrients. So I say nutrition is a procurement and procurement and utilization of nutrients. For what purpose? Why do we eat food? For energy or growth and development, or to carry out various life process, is what I mean by nutrition. So यहाँ पे actually चार keywords. पहला procurement. What is procurement? To have. पहला फूड आना तो चाहिए. फिर utilize, खाने के बाद वो बॉडी यूटिलाइज करनी चाहिए. Second, what is utilizing? Nutrients. And for what purpose? इनमें आपको ऑप्शन है, आपको जो लिखना है लिखो. So you can write nutrition is defined as procurement and utilization of nutrients for energy or growth and development or to carry out various life processes is termed as nutrition. Am I clear? Procurement and utilization of nutrients for energy, growth, development, or to carry out various life processes is known as nutrition. Put out here. Next, nutrients use okay. So we need to understand what are nutrients. Second, we need to understand what are nutrients. What are nutrients? क्या खाते हो? Which nutrient do you eat? As simple as that. Good. So all these are referred as nutrients. So what are nutrients? Use the example. Any chemical substance which gives body energy. Okay, basically what are nutrients? The chemical substances which when consumed gives me energy is known as nutrients. Okay, यहाँ पे थोड़ा पढ़ता है because any chemical substance which gives me energy to carry out life processes is known as nutrient. अब सर मैं डीजल पेट्रोल पीता हूँ, उससे एनर्जी आएगी? ऐसा नहीं. And डीजल पेट्रोल is not a nutrient, but carbohydrate, proteins, lipids,
vitamins, minerals, fibers, water for that matter, all of them comes under nutrients. Okay, so all these examples which we gave now, सबको पता है. So nutrients are classified in two types. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक में दिया है वॉल्यूम में, पर बोर्ड में कहीं पूछते नहीं, कभी आता नहीं, पर ये बुक टेक्स्ट बुक का पार्ट में जस्ट फॉर ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दिया होगा. Nutrients of two types. One is known as organic nutrient, another is known as inorganic. What are organic? Mostly compounds which are having carbon and complex form. So यहाँ पे आते हैं proteins, carbohydrates and lipids. Inorganic में जो बचे हैं वो सब inorganic glands. What is it? Iron is an example of minerals. So यहाँ पे minerals, vitamins, water. Okay. इसके अलावा चल फाइबर जो है part of it comes under organic, and vitamins जो है some vitamins also come under organic, but basically they are coming under inorganic. So we are organic, inorganic, proteins, carbohydrates, lipids are organic, others are inorganic. इस पूरे पार्ट में एक ही क्वेश्चन आता है, डिफाइन न्यूट्रिशन, प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स for growth, energy, development, or to carry out various life processes is known as nutrition. कोई doubt है यहाँ तक? Next we move on to the next part. Types of nutrition. Nutrition is broadly divided into two main types. Answer. Autotrophic and heterotrophic. So what is autotrophic and what is heterotrophic? पढ़ा होगा ना लोग. What is it? Mode of procurement of food. हाँ तो क्या है? So autotrophic, they make their own food. What is heterotrophic? They eat the food made by other organisms. Made by other organisms. Children, अब अपना काम simplify करना है, that we learn much better way. Auto, self, own. Trophic, nutrition or nourishment. Self nourishing organism, जो खुद बनाते हैं, that is autotrophic. Heterotrophic, hetero means other, which are dependent upon other organisms for food or nourishment, are known as heterotrophic. अब autotrophic का definition बाहर करना है, heterotrophic का definition बाहर करना है. So what we will do, हम definition ऐसे बनाएंगे क्या वो simplify है. So with the name autotrophic, those organisms which prepare their own food with the help of simple inorganic substances. So one will prepare their own food with the help of simple inorganic substances are referred as autotrophs, and the mode of nutrition is autotrophic nutrition. Is it clear? They're very easy to remember. Those organisms which prepare their own food with the help of simple inorganic substances are referred as autotrophs, and the mode of nutrition is autotrophic. Without it, इसी definition को इसमें डालना है. Heterotrophic exactly same होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा change होगा. So what will you write? Those organisms which cannot make their own. Just same रखना है, अपने को जल्दी आता है. Those organisms which cannot make their own food and are dependent on other organisms. Okay. When I say other organisms, can I say I'm eating somebody else? है ना? Other organism तो वही हो ना, क्या वो organism किसी और organism को खा रहा है? Okay. Then सबके साथ bonded है ना? कि ना? कोई वेज भी होगा शायद से यहाँ पे. तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा ही चेंज करना है. Cannot make their own food and are dependent on autotrophs or other
ऑर्गेनिज्म या इधर हेटरोट्रॉफ भी लिखोगे चलेगा। and I say autotroph मतलब क्या, either they are eating plants or they are consuming other organ, मतलब either they are vegetarian or they are non vegetarian। okay, अगर घास फूस खाते होगे तो they are eating on the autotrophs, अगर नॉन वेज खाते होंगे तो you are eating other organism। दोनों केस में खाना खुद नहीं बन रहा है, तो dependent on somebody else। so that is what I mean by heterotrophic nutrition। everybody, those organisms which will prepare their own food with the help of simple inorganic autotrophs and the modern nutrition as autotrophic। so what is heterotrophic? those organisms which cannot prepare their own and are dependent upon autotrophs or other are referred as heterotrophs and the mode of nutrition as heterotrophic nutrition। कोई डाउट है? So we go ahead to the next part। अब autotrophic के सब categories। Autotrophic is divided into two types। Anybody? हाँ पता है नहीं? Okay, autotrophic is further divided into phototrophic and chemotrophic। चल लिखते वक्त हम भले ही लिखते हैं फोटोट्रॉपिक पर कीमोट्रॉपिक, but actual word is photo autotrophic, कीमो ऑटोट्रॉपिक। पर वो अपन लिखते वक्त ऑटो निकालेगा, अजूम वो इसका ही पार्ट है। सो फोटोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक। अब इनके डेफिनेशन जो है अगेन इनका डेफिनेशन हम इससे डिराइव करें। सो वी जस्ट से phototropic, those organisms which can prepare their own food with the help of sunlight। अब रिप्लेस करना phototropic को, वो सिंपल इन्होंने को स्पेसिफाई करना है। those organisms which can prepare their own food with the help of sunlight are known as phototrophs and the mode of nutrition as phototrophic nutrition। okay, is it easy to remember? सिंपल इन्होंने जल्दी क्या होगा, लाइट आएगा। तो अब कीमोट्रॉपिक का क्या डेफिनेशन होगा? think on this line only, those organisms which can prepare their own food with the help of फोटोट्रॉपिक में क्या लिखा आपने, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो कीमोट्रॉपिक में क्या लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ऐड करना है, बिकॉज यहाँ पे केमिकल्स जो है आर नथिंग बट मिनरल्स। पर वो किसके लिए जो है, सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट एनर्जी है, सबको पता है, तो उसको लिखने के सनलाइट एनर्जी ये बोलने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे बोलने की जरूरत है क्या, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स व्हिच इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो लाइक डिफरेंट एग्जांपल बट राइट नाउ इतना समझ में, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट is shown as phototropic। those organisms which can prepare their own food with the help of chemicals are referred as chemotrophic। source of energy are referred as chemotrophic। कोई डाउट है? श्योर एवरीबॉडी समझ में आया? तो अब मुझे इनका एग्जांपल चाहिए। plants, autotroph, ऑटोट्रॉफ्स में plants, ग्रीन प्लांट, ठीक हो ना? हाँ, हेटरोट्रॉफ ह्यूमंस। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझता हूँ, ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट्स, हेटरोट्रॉफ्स ह्यूमंस और एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स। हाँ नहीं, विनस फ्लाइट्रैप छोड़ दो, मेरे हिसाब से ग्रीन प्लांट बोला तो नॉन ग्रीन प्लांट।
आई एम नॉट गोइंग टू दैट कैटेगरी ओनली। घर पे फ्लावर बेड वगैरह है, पेड़ भी रखते हैं घर पे, तो वहाँ पे ब्राउन कलर के लीफ, ऑरेंज कलर के लीफ, पर्पल कलर के लीफ होंगे, प्रोटॉन होता है वगैरह, अलग अलग लीफ कलर का, ग्रीन के अलावा, तो वो सब हेटेरोट्रॉपिक है, बराबर? हाँ ना आना चलता है क्या? फर्स्ट थिंग, एक जो मिस्टेक आपको वॉल्यूम मिशन हुआ, चेंज किया नहीं पता नहीं, there is an orthodox example green plants. Strike out that word green. You just say plants. Because all plants come under orthodox. Okay, हाँ जो Venus flytrap, Rafflesia और ये सब कुछ है, शायद वो प्राइमरी ऑर्थोडॉक्स होता है, सेकेंडरी वो दिखाते कुछ और, they are basically coming under orthodox. So we do not say it as green plants. अपन लिखते हो प्लांट। हेटेरोट्रॉप में एनिमल्स और कितना समझ में आया? अब ऑटोट्रॉपिक में फोटोट्रॉपिक और कीमोट्रॉपिक आता है, तो इसका एग्जांपल क्या, उसका एग्जांपल सर फोटोट्रॉपिक में ग्रीन प्लांट्स, सर कीमोट्रॉपिक में नॉन ग्रीन। फोटोट्रॉपिक एग्जांपल अगेन इज प्लांट्स, बिकॉज इररिस्पेक्टिव प्लांट्स फोटोट्रॉपिक होते हैं, इनका मुझे बोलने की जरूरत नहीं। सो यहाँ पे प्लांट्स आते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज यूग्लिना, okay, which is a category which is showing a phototropic nutrition. Okay, अब important है कीमोट्रॉपिक। अब कीमोट्रॉपिक में there are many examples, जैसे आपको नेम डेफिनेशन है, those organisms depend on with the help of chemicals source of energy, तो केमिकल्स मैंने कहा मिनरल्स होते हैं, जितने नाम याद आते हैं एलिमेंट्स के चिपका देना। ओके, सो यहाँ पे कॉपर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, जिंक बैक्टीरिया, मैग्नीशियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, जितने नाम आते हैं दो तीन लिख देना, ये जनरलाइज करें, ये मतलब इंप्रेशन ओके, ज्यादा इंप्रेस करना है, तो ज्यादा इंप्रेस के चक्कर में मार्क्स मत लेना क्या, बिकॉज वो ज्यादा इंप्रेस करने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, सम ऑफ द एग्जांपल्स नॉट गिवन इन योर बुक, बट माय स्टडी 9th स्टैंडर्ड नहीं 9th स्टैंडर्ड में स्किप था, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस, मिथानोकोकस, मिथानोबैक्टर, एज़ोटोबैक्टर, फिर सुना है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम, राइबोसोम सेल का पार्ट हुआ, राइजोबियम, ये सब क्या है, दे आर आइदर यूजिंग नाइट्रोजन एज अ सोर्स, ये सब आ जाते हैं कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सिर्फ बैक्टीरिया मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ डिकम्पोजर्स तो रॉन्ग ही होगा, डिकम्पोज कम अंडर हेटेरोट्रॉपिक, यहाँ पे यू नीड टू स्पेसिफाई, आइदर ये नाम से लिखो जो सबसे इजी है, बिकॉज सबसे पहला स्पेलिंग आती है, कॉपर आयरन वगैरह स्पेलिंग प्रॉपर आती है तो इंप्रेशन डालना, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस, मिथानोकोकस, चाहिए तो मैं लिख लेता हूँ, नाइट्रोसोमोनस, then मिथानोकोकस, नाइट्रोकोकस, एज़ोटोबैक्टर, तीन काफी है आपको दो याद रखना है। Okay, so these are some of the examples of chemotropic nutrition. अब हमने स्टार्ट किया ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, उसके बाद फोटोट्रॉप, कीमोट्रॉप, उसके बाद इनका एग्जांपल्स, और ये यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, बस उतना ही पढ़ना है, डिफाइन एंड 1-2 एग्जांपल्स। अब हमें पढ़ना है ये वाला पार्ट, that is ending over there, so we continue with this part. The moment I say phototropic nutrition, which process comes to your mind? Photosynthesis. तो अब अगले 15-20 आधा घंटा तक हम पूरा फोटोसिंथेसिस के ऊपर ही पढ़ने वाले। So the first question is फोटोसिंथेसिस सुना होगा, कभी बार पढ़ा भी होगा उसके बारे में, है ना? बेसिक क्वेश्चन, what is the reaction of photosynthesis? I don't want a proper chemical reaction. अपने words में ऐसा this reacts with this to give me this and this.
फोटोसिंथेसिस सुना था ना? हाँ, क्या रिएक्ट करता है? water, carbon dioxide, with the help of plus. With the help of Chlorofus. with the help of chlorophyll. हाँ, Makes glucose, water and oxygen. good. पूरा रामायण हो गया, उसमें राम ने क्या है? Good. With the help of sunlight. Phototropic है ना, तो फोटो लाइट तो इधर गया, तो यह properly said it is carbon dioxide plus water in presence of sunlight and chlorophyll gives me C6H12O6 plus H2O plus HO2. ठीक, इसको बैलेंस नहीं किया है, अगर स्टार्ट बैलेंसिंग इट 6CO2 12H2 gives me 6H2 and 6O2. अब सर एक चीज ध्यान देना, आपके बुक में वॉल्यूम में ये रिएक्शन दिया हो, दो रिएक्शन दिए हुए, carbon dioxide plus water in presence of sunlight and chlorophyll gives me glucose plus water plus oxygen. इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives me glucose plus oxygen. There is no water. Okay? दोनों में आप डिफरेंस देखोगे तो सर मतलब जो अपना अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, सर ऊपर 12 मॉलिक्यूल्स थे, 12 मॉलिक्यूल्स से सर 6 मॉलिक्यूल यूज करने थे तो वो 6 यूज कर लिए, सर 6 एक्स्ट्रा थे तो वो दिखाई दे रहे हो। सर नीचे में सिर्फ 6 मॉलिक्यूल थे तो उतना यूज करना था, कुछ एक्स्ट्रा बचा ही नहीं है तो कुछ भी दिखने वाला नहीं। मतलब इन शॉर्ट क्या, प्लांट सिर्फ 6 मॉलिक्यूल्स को चाहिए, तो यहाँ पे अननेसेसरी 6 एक्स्ट्रा लेके रखो। अब चलो दोनों आपकी बुक में दिया हुआ है, बट आप लॉजिकली सिर्फ ये पढ़ना, एक्चुअली ये मतलब ठीक है आपका राइट दे देते बोर्ड पर, इट इज अ रॉन्ग रिएक्शन। व्हाई रॉन्ग? देन मैथ्स देखते हो, मैथ्स खेलते हो, ये देखते हो, क्रिकेट फॉलो करते हो, फुटबॉल थोड़ा बहुत होगा ना, वो भी नहीं। तो अब क्रिकेट में कितने टीम होते हैं? मान लो तुम्हारा लेडीज टीम है ना, 11 खेलने के लिए जा रहे हैं और 3 एक्स्ट्रा है, उसमें 3 इंजर्ड हो गए, 3 खेलने के लिए आए, तीनों के 3 एक्स्ट्रा खेलने आए तो 3 मारे गए। So can I say I have used all the 14 teams? आया ना, 11 ऑलरेडी खेल रहे थे, 3 इंजर्ड हुए, 3 बाहर जो थे वो आए तो यूज हुए ना, टोटल 14 प्लेड, ओके, एट अ टाइम 11 खेले पर टोटल में 14 यूज हुए। अब दूसरा केस है जहां पे 11 है, 3 एक्स्ट्रा और वो 3 बाहर ही रहे, कहना से 14 यूज हुए तो एक्स्ट्रा ही रहेगा, तो नेवर यूज कर। यहाँ पे सेम लागू होता है, वो 12 वाटर मॉलिक्यूल जो लिखा जाता है इसमें से ऑल 12 आर यूज 12 के 12 होते हैं, वो 12 यूज होने के बाद दे आर ब्रोकन एंड रिफॉर्म टू फॉर्म न्यू 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हैं सर 12 थे 6 यूज हुआ 6 बचा वो लिख दिए, ऐसा नहीं है। 12 थे 12 यूज हुआ 6 वापिस नए बने जो यहाँ पे लिखा, ये सेंस ही नहीं है, प्रॉपर में पढ़ते हैं। Am I clear? So the reaction of produces carbon dioxide plus water in presence of sunlight and chlorophyll gives me glucose plus water plus oxygen. Is it clear to everybody? Carbon dioxide plus water
सर आपको भी 12 का बोला। See, 12 water molecules used. So I'm using all the 12 molecules. And out of that, only 6 are reformed. मतलब 12 जो molecules थे, अगर मान लो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 के 12 यूज हो गए, ये सब ब्रेक हो जाएंगे और उसके बाद नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। कितने? 6। ये टूट के वापस बनते हैं। That is what it is. It is not like this. क्या है 12 molecules? सर 12 में से ना सिर्फ 6 यूज हो गए और 6 बच गए। ऐसा नहीं है। 12 यूज हो गए और वापस नए 6 बने। That is what it is. Clear? So this is all about the photosynthesis reaction. Then अब आपको नोटबुक ओपन करना है। नोटबुक में आपको ये रिएक्शन कॉपी करना है, ऊपर वाला। एक्चुअली आप शॉर्ट फॉर्म लिखोगे भी सनलाइट लिखोगे एंड नॉट सन। क्लोरोफिल शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। After writing this, you leave a line and give a next heading. Events occurring in photosynthesis. Okay, then why I am making you write this part? आपकी बुक में ये हेडिंग दिया हो वॉल्यूम में, इवेंट्स ऑकरिंग इन फोटोसिंथेसिस, और उसके नीचे का एक्सप्लेनेशन इज वेरी ब्रीफ, इवन इन टेक्स्ट बुक एंड इवन ओवर हियर, जस्ट टू मेक यू मोर बेटर वे टू अंडरस्टैंड दैट आई एम मेकिंग इट राइट इन योर बुक, ताकि आपको प्रॉपरली आइडिया आ जाए कि अपन क्या सीख रहे हैं। इवेंट्स ऑकरिंग इन फोटोसिंथेसिस के बाद नीचे आप हेडिंग डालोगे light reaction. We'll draw a tabular part and write dark reaction. इतना करके you will stop. Is it like this? बुक का पहला पेज और पहला लेक्चर इसके स्किल जाएगा, उसके बाद जैसे टाइम बढ़ेगा उसके बाद है ना, बुक का फर्स्ट पेज पढ़ने होता है, उसके बाद जैसे रियलिटी आती है कुछ। डन? ओके, फिर इसके बाद मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ लिख रहा हूँ, आप कॉपी नहीं करो। आई गिव यू टाइम टू कॉपी आफ्टरवर्ड, बिकॉज़ इसमें कुछ ऐड अप करना है मुझे, तो आप अभी लिखोगे तो उसमें जगह नहीं बचेगी। So first let me complete and make you understand this part, then you copy. I'll give you time. Shall I start? Okay. Ashlan, the entire process, the reaction अपन ने लिखा है, actually this occurs together, but technically आप जब 11th और 12th में जाओगे आगे क्लास, ये reaction है ही नहीं, ये हम समरी पढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोसेस का बेसिक समरी पढ़े। This actual reaction is somewhere about 30-35 step reaction. और 35 स्टेप में से सब कुछ का क्लब 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 करते माइनस डिडक्ट करते हुए इस पे समरी पे आ गए। ओके, सो इट्स अ ह्यूज प्रोसेस जिसको अपन शॉर्ट में लिखा। अब उसको फर्दर स्टडी करने के लिए टू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड,
हम इस पूरे रिएक्शन को दो फेजेस में डाल देंगे. So events occurring in photosynthesis is the entire process is divided into two main phases. One it is known as light reaction, another it is known as dark reaction. What happens in the light reaction? First, मैंने यहाँ पे लिखना है इसमें नजर पड़ रहा. First process is activation of chlorophyll in the presence of this activation of chlorophyll. Okay. Now, what is activation of chlorophyll? It takes place in presence of sunlight. Now, chemistry में आपने सुना होगा, when an atom receives energy, it goes into excited state and start releasing electrons. So, if an atom releases the electron, what is the charge on it? अगर वो एक इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है. Here chlorophyll is getting excited, so यहाँ पे chlorophyll in presence of sunlight. तो वो energy receive कर रहा है. So because it gets energy, it becomes excited and start releasing a electron. So what is the charge on chlorophyll then? Positive plus E minus. वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और कुछ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है. इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ chlorophyll. Am I clear? Second step, photolysis of water. आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सुना होगा. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? Process in which electricity is passed through water To separate to make ions of which have either positive or negative. अरे but which ions? Hydrogen ions and oxygen. Then simple language, splitting of water in hydrogen and oxygen in the presence of electric current. Ion. As simple as that. So electrolysis of water, splitting of water into hydrogen and oxygen in presence of electricity. So what will be photolysis of water? Splitting of hydrogen and oxygen in presence of sunlight. Splitting of water in hydrogen and oxygen in presence of sunlight is known as photolysis of water. तो यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख ही रहा हूँ. यहाँ पे water in presence of sun splits to give me hydrogen plus electron plus photon. Actually अलग है. 4H plus 4 डिग्री की जरूरत नहीं है. मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ. क्या हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और साथ में अल्टीमेटली ऑक्सीजन भी. ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं बनता इमीडिएटली, इट टेक्स टाइम एंड देन फॉर्म पर बनता है, अपने लिए बनता है. अब कितने स्टेप्स हुए? 2. और ये दोनों स्टेप में mass part from 1 and 2 we get. Now what is that we get? Ultimately the time pass करते हैं. This electron, this hydrogen and this electron would be received by a electron acceptor and a hydrogen acceptor. ये आपको नहीं, वो कोई तो रिसीव करता है, इतना समझना. अल्टीमेटली रिसीव करने की क्या बनता है? फ्रॉम दैट वी गेट एनर्जी. अब इस प्रोसेस में एनर्जी क्या है? सनलाइट, सोलर एनर्जी. अब ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल एनर्जी, व्हिच इज द एनर्जी इन आवर बॉडी. इन व्हिच फॉर्म? हमारा 9th standard mitochondria is a powerhouse of our body. It produces energy ATP. तो यहाँ पे ये एनर्जी है, वो कन्वर्ट होती है फ्रॉम 1 and 2 we get ATP and NADPH. अगर ये नाम याद रहा तो लिखो, नहीं we get energy molecules. चलिए
व्हाट इज एटीपी? एनर्जी। व्हाट इज NADPH? पहली बार सुना। ओके, चल मैंने इसको 100 रुपए के 5 लिए, कितना होगा? और मैंने इसको 500 रुपए का 1 नोट दिया। कहना से बोथ द डिनोमिनेशंस सेम इन टर्म्स ऑफ फाइनल डिनोमिनेशंस। इसको ही 500 मिला, तुझको ही 500 मिला, तो सेम है। 1 NADPH is equal to 3 ATPs। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है? सब एटीपी मिल रहा है, विच आर एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है? सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यहां तक कोई डाउट है? चलो गो अहेड। अब इसको देखना है और यहाँ पे देखना है और मुझे बोलना है इनमें से क्या यूज हुआ। ये यूज हो गया, ठीक है। सनलाइट ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। क्या यूज नहीं हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। चलन अब हमने फर्स्ट स्टेप में सिर्फ कन्वर्ट किया सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी। दिस केमिकल एनर्जी ATP प्लस NADPH या अपने लिए सिंपल एनर्जी मॉलिक्यूल्स combines with carbon dioxide to give me टेक्निकल टर्म में the energy molecule reduces carbon dioxide to give me glucose। इतना समझ में आया? अब इन दो स्टेप्स में क्या कॉमन है? और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, क्या कॉमन था? सनलाइट। जब ये पढ़ा गया तो देयर वाज अ नेमिंग सेरेमनी, इनको कुछ नाम देना है। तो नेम में क्या सोचना है, क्या सोचना है, क्या सोचना है? अरे कॉमन लाइट है। सो व्हाट वाज द नेम गिवन? लाइट। कैन इट ऑकर विदाउट लाइट? नो। सो लाइट रिएक्शन। जब ये समझ में आ गया, इसका भी नाम देना था। बहुत सर फोड़ा, नाम क्या देना है, नाम क्या देना है, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं ना। ऐसा लाइट चाहिए, चाहिए चाहिए, कुछ नहीं। किसने बोला? अरे क्यों दिमाग फोड़ रहा है, दे दिया ऑपोजिट नाम से। सो इट्स जस्ट अ नेम गिवन विदाउट एनी मीनिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि प्लांट को अंधेरे में रखो तभी एनर्जी। ओके, सो व्हेन यू कीप द प्लांट डार्क तभी फूड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अब चलो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी, इसका रीजन है ये उनके पहले के नाम है, आउटडेटेड नेम, जो लोअर क्लासेस में पढ़ते। अब ये नाम आउटडेटेड हो चुके हैं, अब इनके प्रॉपर नाम आ चुके हैं। द लाइट रिएक्शन नाउ इज रिफर्ड एज लाइट डिपेंडेंट फेज और रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट मतलब क्या? बिना लाइट के ये हो ही नहीं सकता। What will be dark reaction then? Light independent phase. Why independent? Because इसमें लाइट हो या ना उसको कोई फर्क नहीं। लाइट होगा तभी करेगा, लाइट नहीं होगा तभी भी करेगा। सो इट इज इररिस्पेक्टिव, लाइट हो ना हो। मैं तो मम्मी डैडी हो ना हो, हम तो अपनी मर्जी के करेंगे, वैसा है। So that is what light independent phase is। और एक चीज, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे, ये ऐसे नहीं होता। इट ऑकर्स इन अ साइक्लिक फॉर्म, समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे एटीपी और NADPH एंटर करता है साइकिल के अंदर, साथ में एंटर करता है CO2 और रिलीज होता है ग्लूकोज, और वापस रिलीज होगा ADP एंड NADP। ATP से एक फॉस्फेट निकालो तो ADP बनेगा, NADPH में से हाइड्रोजन होता है तो NADP बन जाता है। तो वो आपको जरूरत नहीं, पर साइक्लिक फॉर्म में होगा। ये जो साइकिल था ये पहली बार डिस्क्राइब किया था बाय केल्विन। इसके लिए इसको केल्विन साइकिल भी कहा था। फिलहाल मैं आपको सिर्फ उतना ही दे रहा हूं जितना आपके काम का है।
बिकॉज इसके अलावा इसको बायोसिंथेटिक फेज ब्लैकमैन रिएक्शन वगैरह वगैरह मैंने बहुत कुछ बोला। अपने लिए सिर्फ ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट या कैल्विनिज्म। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू chemical energy. This chemical energy utilized for the reduction of glucose, sorry, carbon dioxide to form glucose. अब ये कॉपी डाउन कर लेंगे। After copying down this, नीचे एक नोट लिख देना। Reactions are not for syllabus. और एग्जाम में ये मत लिखना, बिकॉज आपको सिर्फ ये हेडिंग्स है। रिएक्शन इज नॉट अ प्रॉपर रिएक्शन, दिस इज फॉर ओनली योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट। तो ये प्रॉपर बैलेंस है टेक्निकल रिएक्शन। Today was the second year, first year? Second year. Lot of second year. Probably what is the tentative date for each? April 22nd. April 22nd. So party only. No. Party only. Then नोट लिख देना याद से, रिएक्शन आर नॉट देयर फॉर सिलेबस। ओके, अगर आपका हो गया होगा लिख के, तो व्हाट आई वांट टू डू इज ओपन योर वॉल्यूम लाइक प्रोसेसेस में पेज नंबर लाइक प्रोसेसेस में ये थर्ड पेज पे होगा। पेज नंबर 158 ओपन करना वॉल्यूम ऊपर रिएक्शन टू 1 158
अनन्या आपका नाम वंशिका वंशिका मैडम, जरा जल्दी जल्दी लिखो, हाँ जल्दी जरा। Okay, if you done with the part writing part, तो अगर आप अपना वॉल्यूम ओपन करोगे 158 पेज के ऊपर, तो वहाँ पे सबसे ऊपर रिएक्शन लिखा होगा ना, उसके नीचे इवेंट्स ऑफरिंग ड्यूरिंग फोटोज लिखा है। अगर आप उसको ध्यान दोगे तो उसमें ब्लैक कुछ हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट सिर्फ ये वर्ड्स किए हुए हैं, दैट इवन इन केल्विन साइकिल लाइट इंडिपेंडेंट ऐसे लिखा हुआ है। उसमें आप देखो कि आपको रिएक्शन या कुछ भी लिखा नहीं, बिकॉज बोर्ड आपको डिटेल में नहीं बोल रहा है, सिर्फ जनरल टर्म। तो अगर मैं वहां पे बोलूंगा व्हाट इज केल्विन साइकिल, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैंने आपको लिखा है क्या एक्चुअली होता है। Then, but please understand, these are all brief summaries. These are not actual processes. Actual processes से बहुत बड़ा जो आप 11th-12th में पढ़ोगे, बायोलॉजी लिया तो हम भी बोला बट एक चीज बोलना भूल गया मैं स्कूल के साथ में। What's your future plan? Anybody medical field? एक इंजीनियरिंग, एक फैशन डिजाइनिंग, इनका लड़कियों एक तो मुझे फैशन डिजाइनिंग ज्यादा बोलते हैं, क्या बनना चाहते हैं? डिजाइनिंग नहीं यार, चाह डिजाइनिंग अनडिसाइड रिसर्च करना, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, तुम्हारा इस साल तक होगा डिसाइड। ओके, उसके बाद जो एक हेडिंग दिया हुआ है छोटा सा, व्हाट इज हेडिंग गिवन? फिलहाल टाइम बीइंग के स्किप करो, टाइम बीइंग। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दिया हुआ है ना, अब वो जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, उसके नीचे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, उसके बाद लिखा है अदर मटेरियल्स। तो जो दो पैराग्राफ दिए ना, वो अपने काम का नहीं है, मतलब बुक में है तो पढ़ लेना, सिर्फ मैं एक लाइन समझाऊंगा ना। अगर वो रिएक्शन देखने के बाद इतना समझ में आता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो क्या होंगे? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरीन। तो आपने को दो चीजें, पहली चीज वो चार चीजें जो रिक्वायर्ड है वो कहां से, वो हो गया पहले का, और दूसरी चीज वो अदर मटेरियल क्या होता है वो पढ़ी। तो अब पहला कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, द प्लांट टेक्स इन थ्रू स्टोमेटा, खत्म। वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल taken by the root, absorbed by the root and then transported to the leaves. Then sunlight, sun distributed by the leaves, specifically by chlorophyll. Chlorophyll, green color pigment, which traps the solar energy and converts it into chemical energy. ये चार चीजें रिक्वायर होती है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस होता है क्या? नहीं, ये चार चीजें आ गई। अब उसके अलावा other substances are nutrients which are required for the entire process. अब जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये सिर्फ समरी है, एक्चुअल रिएक्शन 35-40 रिएक्शंस है। तो इट्स लाइक मैगी बनाने आता है, आता है? तो टेस्ट करते हैं, आता ना? कैन यू से क्या करना होगा मैगी बनाने के लिए? पानी उबालना, फिर मैगी डाल के फिर उसमें जो मसाला है फिर बॉईल करना। बेसिक जनरल नॉलेज तो आता है, पर डू वी से लाइक दिस, जब बर्तन लेना है, गैस ऑन करना है, फिर पानी डालना है, जनरल है, वही सब कुछ किया है, पानी डालना है। अब अगर आपकी मम्मी किसी और से नो डिश कुछ दे दी है ना, ये बनाना है तो वो बोलते हैं हाँ ये लेना, भूनना, ये करना, खत्म, 5 मिनट 2 मिनट में बता देते हैं। बस इसे जब सब्जी लेना है, उसको वॉश करना है, फिर कट करना है, उसको डालना है, फिर बॉईल करना है, कुछ और करना है, उसमें सॉल्ट डालना है, ये करना है, इतना होता है नहीं। तो देयर आर लॉट ऑफ डिटेलिंग इन दैट रिक्वायर्ड, जो मम्मी को एक्सप्लेन करेगा ये करना है, इसको उसको बोलने की जरूरत नहीं होती।
तो वहां पे वो रिएक्शन लिखा हुआ है, उस रिएक्शन के अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, एनपीके, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, आयरन, जितने आपने लोअर क्लासेस में 9 में पढ़ा होगा, क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जितने नाम याद आते हैं, all that nutrients are required for the growth of the plant or for photosynthesis to occur, and that is what that other materials are. From where are they derived? From the soil, absorbed by the roots and plants. Just a typical example to give is, उस न्यूट्रिएंट में एक न्यूट्रिएंट मैग्नीशियम, बिना मैग्नीशियम के क्लोरोफिल नहीं बनता, सो बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस का क्या, बिना नाइट्रोजन के पूरा रिएक्शन एक बार डीएनए से फिर उससे बने, तो क्या फोटोसिंथेसिस ऑकर अगेन, कुछ चीजें चाहिए, बिकॉज़ बिना उसके कुछ भी रिएक्शन हो नहीं, सो दैट इज ऑल दैट न्यूट्रिएंट्स गिवन, एम आई क्लियर? तो वो सब कुछ हो गया। अब उसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग दिया हुआ, और जो नेक्स्ट हेडिंग में ओके, अब आप उस रिएक्शन पे देखिए, ठीक, और आपने अपना मैगी का एग्जांपल जो दिया, ठीक, मैगी अच्छा बनना या बुरा बनना या मैगी बनाना है, उसके लिए क्या फैक्टर डिपेंड करेगा? टाइम, टेम्परेचर, मैगी, मैगी सबसे इम्पोर्टेंट तो मैगी, और टाइम, कितने टाइम के लिए, इधर ज्यादा टाइम के रखना तो चल जाएगा, और अमाउंट, ओके, और एक चीज और, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट मैगी मसाला डाला तो टेस्ट आएगा ना, वरना टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट होएगा ना। तो अब उस रिएक्शन के हिसाब से व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जो चाहिए अगर वही नहीं होगा तो अफेक्ट करेगा। तो व्हाट ऑब्वियस ना, पाव भाजी बनाने के लिए पाव ही नहीं है तो पाव भाजी कैसे बनेगी? वैसे ही है, बिना कार्बन डाइऑक्साइड, बिना वाटर, बिना सनलाइट, बिना क्लोरोफिल के will the photosynthesis form doing? Some of the other they would be affecting photosynthesis. So there are 4 factors affecting photosynthesis. There are 4 factors: carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll. जो न्यूट्रिएंट्स है अपन ने वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, उसके ना कहीं उस चीज बनाने में, तो उसको छोड़ो, बचे 4। अब वो 4 में से 2 डायरेक्टली अफेक्ट करते, मतलब पानी तो पाव भाजी, मैगी ने तो मैगी ही नहीं बनता, तो ऐसा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डायरेक्टली अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस, और दूसरा होता है सनलाइट। ये 2 डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो 2 अफेक्ट करते हैं पर इनडायरेक्ट फॉर्म, तो अपने बुक में मेंशन में नहीं। What are 2 other factors? Water and chlorine. अब 2 नो अफेक्ट नहीं करते, उसके बारे में सिर्फ 2-3 लाइन पढ़ लेंगे, सुनेंगे, बुक में आएगा, एग्जाम में आएगा, बस वो क्यों नहीं अफेक्ट करते उसमें। तो अपन एग्जांपल देते हैं, प्लांट पानी एब्सॉर्ब करता है, वाटर एब्सॉर्ब बाय द प्लांट एंड देन इट लूजेस द वाटर इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। तो जब प्लांट ने 100 ml वाटर एब्सॉर्ब कर लिया, ये properly 1 liter water is absorbed, how much percentage will be lost in the form of transpiration? Rough idea, 100% वाटर एब्सॉर्ब कर लिया, जो भी अमाउंट है उसका 100% एब्सॉर्ब कर लिया, उसमें से कितना परसेंट वाटर लॉस होगा? 10%, 50, good. The answer is 99%. 99% वो फेंक देता है, कितना बचा? वो 1% includes everything. फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, साइटोप्लाज्म कंटेंट के लिए होता है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम के लिए होता है, तो सब मिला के 1%। फोटोसिंथेसिस के लिए एक्चुअली कितना होगा?
लेस देन 1% ना, 0 पॉइंट समथिंग, उतना पानी तो उसके साइटोप्लाज्म में होगा ही होगा एट एनी गिवन टाइम। तो वाटर डायरेक्टली कभी अफेक्ट नहीं करेगा, तो इनडायरेक्ट पानी कम हुआ स्टोमाटा क्लोज, पानी कम हुआ सेल डाइज, उसके वजह से फोटोसिंथेसिस, पानी कम हुआ उसके टोटल स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं। सो वाटर इज नेवर टेकन इनटू अकाउंट। दूसरा क्लोरोफिल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कलर ऑफ द, हर प्लांट में क्लोरोफिल होता ही है, चाहे वो लाल पीला गुलाबी जो भी हो, उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, कम या ज्यादा। अगर कम हुआ तो प्लांट का दूसरा पिगमेंट कलर दिखाएगा, ब्राउन येलो व्हाटएवर, बट इफ इट इज मोर देन द प्लांट इज ग्रीन इन कलर। तो ये पार्ट एक्स्ट्रा आपको मैं लिखूंगा अगले लेक्चर में, और रिक्वायर्ड और किसी और चीज के लिए रिक्वायर्ड है लिखूंगा। सो देन पिगमेंट इररिस्पेक्टिव इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड दैट इज व्हाई कम या ज्यादा फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा, तो वो भी अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ अफेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट, okay, which we will study in the next lecture. I hope today आपको मैसेज दिया गया था 8 o'clock को लिखना। So we have 2 minutes to wind up. So you can close your books, start packing your bags. अगर कुछ लिखना बाकी है तो लिख दो, नहीं तो बैग पैक कर देना। And last thing is my page okay with you? समझ में आ रहा है? हाँ, घूंगे बहरे हो, मराठी मध्ये ऐकायला येत नाही, बोलायला येत नाही, आम्ही मार्क एक दो मराठी समजतात पुन्हा पुन्हा and born and brought in Maharashtra. I am born in Madhya Pradesh, brought up in North India. अच्छा, ट्रांसफरेबल रिलैक्स में करना तो लगा ही ऐसे ही, एटलीस्ट 10 तक तो मैच मिलेगा, ये बात तो पता है। ये 10 साल से ये मुंबई, उसके पहले पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट में 10 साल काफी टाइम हो गया चलिए, और थोड़ा बहुत समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर प्लीज ब्रिंग योर, मतलब 12 की दूसरे टाइम पे कुछ लेके आना, साथ में ना हमेशा कलर पेंसिल ना, पूरा बॉक्स की जरूरत नहीं, 2-3 कलर लेके आना, स्पेसिफिकली ब्लू और रेड, बस ये बाद में चाहिए हमें और सब क्वेश्चन आएंगे, तो कैरी ब्लू रेड 3-4 कलर लेके आना, भी थोड़ा ड्रॉ करने के टाइम। तो पर खुद का इरेजर, शार्पनर, पेन, स्पेसिफिकली पॉइंट, तेरे बारे में एक्सेप्शन है, तो नॉर्मली मैंने एक चीज नोट की है, बॉयज के पास कुछ नहीं होता है और गर्ल्स के पास सब कुछ होता है। बॉयज बेकार होते हैं इसके लिए कुछ नहीं होता है, पर गर्ल्स का मुझे ये पता है उनके पाउच में सब कुछ कैसे आता है, वो सबसे पाउच में जाता है क्या पता है, पाउच ऑलवेज filled with pencil, eraser, all this stuff. Anyway, children, you can start leaving. Enjoy.